Namaste friend, welcome back to ICU with Dr. Bhautik. In our previous lecture we discussed ARDS ventilator strategy. Today we will discuss two advanced but extremely important concepts, PEEP titration and driving pressure. Many clinicians focus only on FiO2 and PEEP, but the modern ARDS management focus on the something even more important like driving pressure. Recent studies suggest that driving pressure may predict the mortality better than the tidal volume or the PEEP alone, less under than the step by step. Why does the PEEP important? ARDS lung are not completely collapsed. Some alveoli are open, some are collapsed, and some are flooded. When expiration occurs, the alveoli collapse rapidly. This causes atelectic trauma, increased severe hypoxemia. PEEP prevent this collapse. Think of PEEP as a splint that keep the alveoli open at the expiration. Benefit of the PEEP are prevent alveolar collapse, improve oxygenation, improve compliance, reduce shunt, and reduce work of breathing. However, too much of PEEP can also be dangerous. The problem with excessive PEEP are hyperinflation, barotrauma, pneumothorax, reduced venous return, hypotension, right ventricular dysfunction. Therefore, highest PEEP is not the best PEEP. The goal is to best oxygenation with minimal harm. Now understand so there is a chart one given PEEP titration कैसे करना है FiO2 PEEP. ठीक है, हमने आगे भी ARDS नेट के हिसाब से हमने देखा था कि कैसे उसको स्टेप वाइज इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है. FiO2 रिक्वायरमेंट 60 से 70% है तो 14 जितना PEEP रखना है. ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज ड्राइविंग प्रेशर. Now let's discuss most important concept. Driving pressure is equal to plateau pressure minus PEEP. If plateau pressure is 28, PEEP is 10, so driving pressure is 18. 28 minus 10. Simple calculation, but they are extremely important. Driving pressure represents the pressure is required to inflate the lung during each breath. In simple words, it tells how much of the stress the lung is experiencing. Higher the driving pressure means more the lung are stressed and over distended, more ventilator induced lung injury and higher mortality. Driving pressure important क्यों है? Research shows that every increase in driving pressure increase the mortality risk. Target driving pressure less than 15. Lower the is generally better. Think about it this way. Two patients may have same plateau pressure 28. In patient A, PP is 5, so driving pressure is 28. Okay. In patient B, PP is 14, driving pressure is 14. 28 minus 14, although the plateau pressure is identical. And the patient B is safer, therefore never look for a plateau pressure, always calculate the driving pressure. हाउ डज द मेजर ड्राइविंग प्रेशर एट द बेड साइड कैसे उसको स्टेप वाइज मेजर करना होता है. ठीक है, उसका भी हमने एक बनाया हुआ है. तो स्टेप 1 है पेशेंट वॉल्यूम कंट्रोल पे, उसको स्टेप 2 है इंस्पिरेटरी होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए एंड रीड द प्लेटो प्रेशर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द पीप. प्लेटो प्रेशर उसमें 26 दिखा रहा है और पीप है 12, तो ड्राइविंग प्रेशर कितना हुआ 14. Excellent. Target is achieved. Now PEEP titration कैसे करना है. ठीक है, उसमें स्टेप 1 लेता है कि स्टार्ट ARDS वेंटिलेशन स्ट्रेटजी, टाइडल वॉल्यूम 4 to 6 ml per kg, प्लेटो प्रेशर लेस देन 30. स्टेप 2 रहता है असेस करना होता है SpO2, PO2, FiO2 रेशियो, कॉम्प्लाइंस एंड हीमोडायनेमिक्स. स्टेप 3 रहता है इंक्रीज द PEEP ग्रेजुअली, यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर वेज टू इंक्रीमेंट करते हैं. आफ्टर एवरी इंक्रीज द चेक ऑक्सीजनेशन, प्लेटो प्रेशर, ड्राइविंग प्रेशर और ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं. स्टेप 4 रहता है ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स देखते हैं हम. गुड रिस्पॉन्स में क्या रहता है. ठीक है, गुड रिस्पॉन्स में SpO2 इंप्रूव हुआ, कॉम्प्लाइंस इंप्रूव हुआ, ड्राइविंग प्रेशर रिड्यूस हुआ, स्टेबल है, हीमोडायनेमिक्स.
सो दिस इज ऑल एल्वियोलर रिक्रूटमेंट। स्टेप 5 क्या रहता है? हार्मफुल, आइडेंटिफाई हार्मफुल पीप। हार्मफुल में क्या रहती है? साइन क्या रहती है? ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा, प्लेटो प्रेशर बढ़ जाएगा, ड्राइविंग प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लायंस लोअर हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑन इमेजिंग। दिस इज मीन्स एक्सेसिव पीस। हाउ टू फाइंड द बेस्ट पीप? ठीक है, बेस्ट पीप है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? द बेस्ट पीप इज टू पीप दैट प्रोवाइड द बेस्ट ऑक्सीजनेशन, लोएस्ट ड्राइविंग प्रेशर, स्टेबल हेमोडायनेमिक, नॉट नेसेसरीली द हाईएस्ट पीप, not necessarily the lowest PEEP, the optimal pitch. Remember one thing: the best PEEP, best oxygenation, lowest driving pressure, and stable blood pressure. Method of PEEP titration. RDS नेट जो PEEP FiO2 टेबल है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं, मोस्ट वाइडली यूज होता है। लेकिन मेथड 2 रहती है इंक्रीमेंट PEEP ट्रायल। स्टेप वाइज जो इंक्रीमेंट करते हैं ऑक्सीजनेशन और कंप्लायंस को। एक स्टेप 3 भी रहता है, डिक्रीमेंट द PEEP ट्रायल आफ्टर जो बोलते हैं रिक्रूटमेंट मैन्यूअर के बाद रिड्यूस करते जाते हैं पीप को और फाइंड द लोएस्ट पीप, द मेंटेन द ऑक्सीजनेशन। मेथड 4 लेती है कि इसमें ड्राइविंग प्रेशर गाइडेड द पीप, चूज द पीप दैट गिव द लोएस्ट ड्राइविंग प्रेशर। मेनी एक्सपर्ट्स फॉलो दिस मेथड। क्लिनिकल एग्जांपल से देखें तो पेशेंट विद सीवियर एआरडीएस का है, पीप 5 रखा है, प्लेटो प्रेशर 20 है, ड्राइविंग प्रेशर 23 है, और उसको इंक्रीज किया 10 किया तो ड्राइविंग प्रेशर कितना हो गया? 18 हो गया। उसको इंक्रीज करके 14 किया तो ड्राइविंग प्रेशर कितना होगा? 14 हो गया। सो जैसे compliance is improved, oxygenation improved, blood pressure is stable, so this is the optimal PEEP. टेक होम मैसेज इसका क्या रहेगा? अपना की क्या रहेगी? Low tidal volume remain the fundamental of ARDS. Plateau pressure should be always be less than 30. Driving pressure should always be 15, below 15, and best PEEP, not the highest PEEP. Always assess the oxygenation, compliance, driving pressure, and hemodynamic together. ARDS management is not about the pushing the room air. It is opening the lung safety and protecting it from the injury. Protect, recruit, support, and heal. Thank you. I am Dr. Bhautik. See you in the next lecture where we will discuss the prone ventilation in ARDS physiology, indication, and practical ICU management. Thank you. Thank you so much.